हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भव्या है एंड वेलकम टू माय चैनल रैंडम थॉट्स बाय बीके। नाउ दिस इज़ अ न्यू चैनल और इस चैनल पे आई एम जस्ट गोइंग टू पोस्ट दिस सिट डाउन वीडियोस वेयर आई टॉक अबाउट माय थॉट्स। अब आपको लगेगा वाई शुड आई लिसन टू योर थॉट्स, तुम हो कौन? एंड यू आर राइट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग। ऐसा कुछ नहीं है, आई एम जस्ट अ रेगुलर गाय. I'm in my 30s. I live in Gujarat, India, and I'm not particularly very successful at anything, I would say. मतलब when I was young, I wanted to be a cricketer, but इंडिया और क्रिकेट का रिश्ता तो आपको पता ही है, तो obviously that went out for a toss, so I failed there. Then I completed my CA in my fourth attempt. फाइनल में मुझे 4 अटैम्प्ट लगी. Of course that can be considered an achievement क्योंकि CA काफ़ी टफ है, आप सबको पता ही होगा. But I don't do work related to CA, so again I don't see that as a big achievement for me. I personally want to become a writer, script writer. I love movies and stuff. बट आई एम वर्किंग हार्ड सिंस द पास्ट 6 years. 6 साल से मेहनत कर रहा हूँ, बट स्टिल देयर हैज़ बीन नो प्रोग्रेस एज सच टू रिपोर्ट. मतलब आई हैव बीन ट्राइंग टू पिच एंड ऑल बट नथिंग. और मुझे जो बात करनी है इट समहाउ रिलेट्स टू दिस, बिकॉज आई हैव रिटन 6 scripts एंड एनीबडी हु इज़ इनटू राइटिंग, अगर आप उनको पूछोगे कि हाउ मैनी स्क्रिप्ट्स हैव यू रिटन या इज इट हार्ड टू राइट अ फीचर फिल्म स्क्रिप्ट, सो आई एम श्योर एवरीबडी विल टेल यू दैट इट इज़ सुपर हार्ड. इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस and everything. So I've written 6 of them, so that should be considered an achievement, but I myself don't consider it. Why? Because results nahi hai. I've been trying to pitch, and if somebody buys it, then I would consider writing the script a success. And I want to talk about this feeling, this overwhelming feeling all the time. आपको कभी ऐसा लगता है कि जैसे आप ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ की ट्रेन, एंड ट्रेन दूर ही जा रही है एंड यू आर रनिंग बिहाइंड इट. जैसे कोई हिंदी मूवी का क्लाइमैक्स सोच लो या कोई भी मूवी का ऐसे एक्शन के ट्रेन जा रही है और आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, बट वो आपके हाथ से थोड़े ही दूर है. एंड एवरी डे इज़ लाइक दैट, दैट फीलिंग कि भाई उठो, जागो, भागो, एंड स्टिल एट द एंड ऑफ द डे समहाउ समवेयर आपको थोड़ा सा रिग्रेट या रह जाता है कि आई एम दिस फार. और वो मेरे को लगता है कि लाइफ टाइम चलेगा. वो जो साइकिल है, जो किसी चीज़ के पीछे भागने की साइकिल है, इट विल कंटिन्यू फॉर अ लाइफ टाइम. एंड दैट इज़ समथिंग कि मुझे लगता है कि लाइक इज़ दैट प्रोपेगेंडा. ऐसे जैसे हमको पहले से सिखाया जाता है कि जब स्कूल में जाते हैं तो कि पढ़ लो फिर मज़े हैं. देन आफ्टर व्हेन यू कम इन 10th बोर्ड्स है, पढ़ लो, उसके बाद नो इशू. फिर आता है 12th के बाद आता है कॉलेज, पढ़ लो, इसके बाद बस ज़िंदगी में मज़े ही है. और जो कोई भी कॉलेज या और 12th और कॉलेज कंप्लीट करके ज़िंदगी में आया है, आई वांट टू आस्क यू, मज़े है? इट इज़ अ फनी थिंग. मतलब लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, हाँ हम सबको पता है, बट शुड इट बी लाइक वी आर हियर फॉर व्हाट, लाइक 60, 70, 80 years? और ये फीलिंग कि अगर वो पूरा टाइम भी स्ट्रगल ही करना है तो फिर क्या मतलब है? आई एम नॉट सेइंग कि बस ऐश करनी है, ऐसी बात नहीं है, बट द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस वो कहीं तो फील होनी चाहिए ना. मुझे धीरे धीरे लग रहा है ऐसे कि दैट फीलिंग ऑफ जॉय जो होता है ना, छोटी चीज़ों में से खुशी मिल जाती, जो जब हम बच्चे थे तब वो चीज़ें होती थी कि कुछ छोटी चीज़ हो जाए,
कुछ यूनिक पत्थर मिल गया हमको चलते चलते रोड पे, तो मज़ा ही आ जाता था। अब तो इंटरनेट और सब इतना एक्सेसिबल है, अब यूट्यूब में कोई भी वीडियो देख लो, आप 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देख लो, एंड द फीलिंग यू विल हैव इज व्हाट्स न्यू, हाँ ये तो देखा है, ठीक है। दैट सेंस ऑफ वंडर, दैट सेंस ऑफ हैप्पीनेस, समहाउ मेरे को ऐसा लग रहा है कि वी आर लूजिंग इट। एंड ऑनेस्टली आई एम स्कैर्ड अबाउट दैट, मतलब personally I am about to be a father, I am expecting a child soon, and I'm feeling कि हाँ, how I'll raise that child, how I'll do it with my family, I'll teach him or her values, I'll help him or her through the world, everything, but वो sense of wonder जो मेरे में अभी है ही नहीं, मैं कैसे पास ऑन करूँ? So दैट इज़ वरिंग मी अ लिटिल। तो बेसिकली जो बात जहाँ से शुरू हुई थी कि वाई शुड यू लिसन टू मी, ऑनेस्टली लाइक आई हैव नथिंग टू प्रोवाइड एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स ऑनेस्टली, बट व्हाट दिस वीडियो इज मोर देन आप मुझे सुने, उससे ज़्यादा मैं कुछ बोल लूँ, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। मेरे को ऐसा लगता है आई एम ट्रीटिंग दिस वीडियो एज अ जर्नल, ऐसे मैं डायरी में लिखूँ, उससे अच्छा ज़माने के साथ चल के why not make a video out of it? So if you are anywhere in this world, if you are listening to this, if you feel the same, if you feel that same sense of overwhelming dread, ऐसे कि ट्रेन छूट रही है, वो वाली फीलिंग, if you empathize with it, then let me know, ऐसे we can start a discussion somewhere somehow, I don't know, मतलब आई वॉन्ट टू नो, क्योंकि जब कभी किसी से मिलते हैं, व्हेन वी गो आउट एंड मीट पीपल, ऑन योर फेस दे आर हैप्पी, दे आर कंटेंट, दे आर मूविंग अहेड इन लाइफ, बट when you go to social media, when you go anywhere and you see that that same person has liked the post which says bad things about Monday, that week start हो गया, oh my god, so एक question आता है, like are they also in the same boat and they are just portraying this false sense of contentment? If everybody is in the same boat, then we should talk about it. No, अगर सबको मंडे से इतना प्रॉब्लम हो रहा है, then we should talk about it. That was one thing I wanted to talk about. And honestly, if you have any solution for the same, अगर आपको लगता है that you have cracked the code, you have found joy, और जो जॉय टिकता है वो जॉय, हाँ 1 मिनट तो मुझे भी खुशी मिलती है, जैसे IPL चालू है और मेरी फेवरेट टीम जीती, तो आई विल बी इन दैट हाई फॉर 10 minutes, 15 minutes, मे बी हाफ अ डे, देन वॉट? आई मीन इफ यू लुक एट इट इन पर्सपेक्टिव, सैडनेस स्टेज मच लॉन्गर देन जॉय। अगर आप दुखी है, अगर आप गुस्सा है, तो वो चीज़ बहुत लंबा टिकेगी rather than the positive things. मतलब इतनी जगह से इंफॉर्मेशन बोम्बार्डमेंट आ रहा है हर जगह से, यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड इज एट योर फिंगर टिप्स बेसिकली, एंड दीज न्यू थिंग्स आर नॉट नाइस थिंग्स। ऐसा नहीं कि सब पॉजिटिव थिंग्स ही स्प्रेड कर रहे हैं। अगर मैं सोचूं कि अगर इफ लेट्स से न्यूज़ चैनल्स, let's say Instagram accounts, let's say YouTube accounts, if I think that they are dedicated to spreading positive news and joy in the world, I can count them on my fingertips. But on the other hand, if I think that these are the accounts, these are the news channels, this is the media that is trying to create controversy, create fear just for profit, so you cannot count how many of those there are. तो शायद इस वजह से भी ये ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है हर सुबह उठ के कि यार ओके, आई मीन इफ आई समराइज, लिविंग शुड नॉट फील लाइक अ चोर। नो, जीना है वो एक काम जैसा तो नहीं लगना चाहिए।
काम ज़रूरी है ज़िंदगी में, सब बात सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट दैट फीलिंग दैट इट्स मंडे, आई हैव टू स्टार्ट माई डे. हैव यू नोटिस लाइक ये मेरे साथ होता है, आई डोंट नो इफ इट हैपेंस विद एवरीबडी. अगर सुबह से मुझे पता है कि मुझे 5 काम करने हैं, देयर आर 5 डिफरेंट टास्क टू बी डन इन द डे, शायद वो सब मिलके 2 ढाई 3 घंटे का काम हो. But the moment I realize I have to do this, there's this crushing sense of laziness is a wrong word, I don't know, but a load in my mind ऐसे कि काम है, काम है, काम है, and for some reason काम खत्म ही नहीं होता. एक काम खत्म हुआ, दूसरा मिला, दूसरा खत्म हुआ. And this is not, I'm not talking about work life business. If you are doing a job, if you are doing a business, मैं उस सेंस में बात नहीं कर. But like if I see my mother, like I don't remember the last time I've seen her relax. If it's Sunday, she has a to-do list. So और वो चीज़ धीरे धीरे मेरे में भी आ रही है, मेरी वाइफ में भी आ रही है. एंड पीपल माई जनरेशन, आई सी दिस एवरीवेयर. नो, we make content around it. Me and my wife, we are couple content creators, and we make content around marriage, around regular life, and the amount of people who empathize with this content, who find it relatable, who engage with it, tells me that this is not just our thing. सिर्फ प्रॉब्लम है या जो भी है वो हमको है ऐसा ज़रूरी नहीं, सबको है. So what is going wrong? I mean, is the system broken? Like what is it? If nobody is satisfied, then isn't something wrong? I say, if you look around, let's say I tell you to count 10 people in your surroundings, your close friends and all. Are they content? I would not say happy. Everybody will say yes, I'm happy. Okay. If you ask me in person, maybe I'll say I'm happy. But am I content with where I am in life? I don't know. And maybe ये जो चीज़ें हमारे अंदर जमा हो रही है ना, that comes out at the worst possible times. You look around. आप पहले 5 साल पहले जाइए, 10 साल पहले जाइए, just think about it. Like, were people this angry at such small things? अभी अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और गलती से आपने किसी को ओवरटेक किया, and the words that you listen from an average person, it is not targeted at anybody. If you make a mistake at work, the attitude that you'll get from your client, from your boss, it is like everybody is venting, everybody is finding ways to vent their inner turmoil, anger, restlessness, ये जो overwhelming feeling की मैं बात कर रहा हूँ. Maybe that. I read something very interesting थोड़ी टाइम पहले. It was a simple thing, but I think it hit the nail on the head. कि if you have a cup of coffee and somebody just pushes you by mistake, then what will spill out? So the answer is obviously coffee. But why coffee? Because you had a cup full of coffee. If you had a cup full of tea, tea would spill out. So if you take that analogy और तुम लोगों पे वो चीज़ लगाओ कि whatever is stored inside you, whatever you are feeling inside, that is what will come out when you get a little push. And believe me, you will get a little push. दिन में 1000 ऐसे मौके आएंगे when you get a little push from life, that, and anything and everything that is inside you will spill out. So we have to be very mindful of what we consume, right? What we are letting inside. सिर्फ अगर नेगेटिविटी आ रही है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी एल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मी, क्योंकि आई एम द वन आई ऑब्जर्व, एंड दिस इज अ जनरल टॉक. जस्ट ऐसे ही मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इफ़ यू फील द सेम, डोंट यू थिंक देयर इज अ नीड टू चेंज? सो या, दिस वॉज माई रैंडम मंडे थॉट.
I'll have more thoughts, I'll have more videos. But this was my first video. If you have managed till here, what I'm looking forward is, no bias of gender, age, nationality, anything. If you are anywhere in this world, by chance you come upon this video, and if you relate to it even a little bit, just drop a comment, just engage with it, share it with somebody you think should listen to this. I mean, I'm not trying to help anybody, I'm just trying to find people, I'm just trying to uh, throw out my thoughts in a public space because I think it might help. So yeah, this is it for this time. अगर आपको लग रहा हो कि हाँ, this is right, if there is anything you feel that I should talk about, क्योंकि ultimately we are all humans, we are facing the same things, maybe not in the same shape or form, but yeah, most of the time we'll relate with each other, somehow, somewhere. So I would love if we could keep the conversation going. I'll make more videos as I have more thoughts. I have thoughts all the time, but now I've taken a decision to start this. So if you are watching till here, thank you so much. And I'll have new random thoughts by BK soon. Thank you.